Okay, so fundamentals of management. Now, how to study fundamentals of management? Again, it's a theoretical paper, but should not be taken lightly. Now, when you start with fundamentals of management, the core concept that comes to your mind should be planning. Planning, which is the most fundamental aspect of the management. And planning, if your planning is good, then the management, the organization can be successful. But if the planning is not effective, then the organization is bound to fail. So planning is very, very important. All the success of the organizations, all the successful organizations also, the backbone behind the success of an organization has always been effective planning. So planning के अंदर उनकी strategies, planning policies, go through that also along with the strategies and policies, management by objectives. इसका भी आपको ध्यान रखना है. So planning, the core fundamental of management, and when you study planning, उसके बाद आपको एक और फंडामेंटल पे ध्यान रखना है, which is organizing, right? Organizing or special, paying special attention to organization structure, which which is comprising of line, staff, difference between line and staff forms of structure, decentralization, that is equally important, departmentation, right? Line and staff, their differences. Decentralization, have you heard about the concept of decentralization? Decentralization is the opposite of centralization. Centralization is when all the power, all the authority is invested with the top management. When all the power lies with the top management, that is centralization. And when the authorities, the power is channelized into various levels of management, that is called as decentralization. So centralization, जब पूरी power, authority, top management के पास हो, एक जगह पर focused हो, that is centralization. And when the authority is bifurcated or is divided or is channelized into various other levels of management also, that is called as decentralization. जहाँ पर power distribute होती जाती है top management से middle level management, lower level management के बीच तक, तो उसको बोला जाता है decentralization. Departmentation, where the onus is on various departments. तो प्लानिंग को स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग. नाउ व्हेन यू स्टडी स्टाफिंग, तो स्टाफिंग के अंदर देयर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सिलेक्शन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस appraisal of the employees. It should also be paid attention to 360-degree performance appraisals. So staffing जब आप करें, it is dealing with all the HR policies, the selection, the performance appraisal. Then your leadership is equally important for the success of an organization. The leadership, and along with leadership there is a concept called group decision making. So group decision making and taking the effective concept of leadership is equally important concept of fundamental of management. And then you are controlling process and procedures. Now controlling क्यों इम्पोर्टेंट है? आपने प्लानिंग तो कर ली पूरी, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं सारे चीजों को एक साथ, स्टाफिंग लीडरशिप के साथ साथ आपको लास्ट में जो परफॉर्मेंस सेटअप किया है आपने प्लानिंग प्रोसीजर्स के अंदर,
उनको वेरिएशंस के साथ जो कंपैरिजन है वो भी करना ज़रूरी है, और जहाँ भी डेविएशंस आए उनको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है. So you'll have to strictly follow various controlling process and procedures, then only the whole management, the whole organization can be successful. So the core fundamentals of management: planning, organizing, your selection, performance appraisals, leadership, group decision making. कंट्रोलिंग के बाद आपको कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स के बारे में भी ध्यान रखना है. द मैनेजमेंट थिंकर्स फ्रॉम इंडिया, ही हैज बीन अ ग्रेट मैनेजमेंट थिंकर. चाणक्य, देन फेयोल्स पॉलिसीज, टेलर, पीटर ड्रकर. इनके जो भी मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, मैनेजमेंट के जो इन्होंने कोर कंसेप्ट्स दिए हैं, उनको भी आप लोग एक बार देखकर जाइएगा. चाणक्य, फेयोल, टेलर, पीटर ड्रकर, बिकॉज द मैनेजमेंट थिंकर्स हैव गिवन वैल्यूएबल concepts of management, and if you are studying fundamentals of management, you cannot ignore the concepts given by these management thinkers and the management strategies also. Management strategies and policies employed by famous entrepreneurs like Ambani, Tata's, Bill Gates, नारायण मूर्ति, राइट. तो ये थोड़ा सा आपको इन फेमस जो एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, अंबानी, टाटा, बिल गेट्स के साथ साथ नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस, जिन्होंने पूरा एक तरह से पूरा एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया है, तो इन सब की मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, साथ ही साथ स्टीव जॉब्स. तो इन सभी फेमस एंटरप्रेन्योर्स ने क्या क्या मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया, उनको एग्जीक्यूट किया टू मेक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू क्रिएट सक्सेसफुल मैनेजमेंट. तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है व्हाइल यू आर स्टडीइंग फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट. थोड़ा सा बिहेवियरल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में भी ग्लांस कर लीजिएगा, बट ऑन द होल दीज आर दी 7 कोर concepts that you are going to use in your preparation for fundamentals of management. यहाँ पर planning है, organization structure which is comprising of line, staff, then difference between line and staff structure, decentralization of power, departmentation, उसके बाद selection, performance appraisals of the employees, group decision making, taking the idea of leadership ahead and controlling process and procedures. Then management thinkers, उनके क्या क्या concepts रहे हैं, famously चाणक्य, फेयोल, टेलर, पीटर ड्रकर. Another important management thinker has been प्रहलाद from India, उनके भी जो concepts रहे हैं. Then management strategies of Ambani, Tata's, Bill Gates, Steve Jobs and नारायण मूर्ति. तो इन सबको आपको देखकर जाना है to clear and to fortify the concepts of fundamentals of management.